Hello, guys. Welcome back to our channel Vi-Desi Sports. Please like, subscribe our videos. आज का मैच हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं हमारे पैनलिस्ट को, सुनित बोरा को। Hi, Vasu. हाय सुनित, वेलकम। Thank you. बिफोर वी स्टार्ट दिस, हमारे जनरेशन ने क्या नहीं देखा। हमारे जनरेशन ने कोविड देख लिया, हमारे जनरेशन ने यूक्रेन का वॉर, यूक्रेन रशिया का वॉर देख लिया, हमारे जनरेशन ने पैलेस्टीन वाला वॉर भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। लेकिन सिर्फ एक चीज शायद जो बच रही है हमारे जनरेशन में, वो है आरसीबी की मेंस टीम कब कब जीतेगी, कब ई साला कब नाम दे आएगा। ऐसे हमारे एक व्यूअर्स, हमारे एक फैन अंकित चौधरी ने कहा है कि कब ऐसा होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहूंगा, अभी तुम 18 years हो जाएगा, बच्चा बड़ा हो गया, फिर भी वोट देने के काबिल हो गया, अडल्ट हो लेकिन गया ये साला कब नाम दे हुआ नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब अच्छा स्टार्ट मैं बोलूंगा, मतलब आरसीबी ने अच्छा स्टार्ट दिया, या अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिला उनको पहली बार। फैफ डुप्लेसी भी अच्छी बैटिंग की। व्हाट वाज योर ऑब्जर्वेशन, क्या हुआ फर्स्ट इनिंग में? Vasu, I think when we reviewed RCB as a team, it was, we always mentioned that, अगर 200 run नहीं करेंगे, it's very hard for them to win a match. And if they have to win, either they do a 200 plus score, or they have to chase. अभी लग रहा है कि देखो इनका बॉलिंग तो वीक है ही, स्पिनर्स तो है नहीं, ढंग का कोई स्पिनर नहीं है आपको। प्लीज, इट वाज वेरी वेरी एविडेंट टुडे with the way they played, at the second half of the match. And then they're struggling with the batsmen as well. It's only Virat who is performing, and the players around him are just scoring at an average of at a strike rate of 120 odd. So कैसे होगा? You cannot just rely on one player to win a match. एग्जैक्टली अगर अगर मैं विराट के बारे में बोलता हूँ तो लोगों ने, मतलब लोग कहते हैं कंट्रोवर्सी करता है, ठीक है। लेकिन लेकिन एग्जैक्टली कमिंग टू योर पॉइंट, अगर विराट नहीं तो कौन? Is RCB becoming a one man team instead of the Fab 3? जो पहले कहते थे ना कि पहले एबीडी, क्रिस गेल और विराट होते थे, फिर एबीडी, क्रिस गेल और I'm forgetting the name, मतलब हमेशा 3 लोग होते थे। लेकिन इस सीजन तो ऐसा लग रहा है कि भाई इट्स अ विराट शो फॉर आरसीबी। विराट अकेले खड़े हैं, बाकी सब बगल में बैठ के सिर्फ शायद तालियां बजा रहे हैं, और शायद लोगों को मौका भी मिल रहा है, अगेन शायद कंट्रोवर्सी हो रही है, लेकिन लोगों को मौका भी मिल रहा है ये प्रूव करने का कि विराट एक अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहे हैं, एक अच्छी पारी नहीं खेल रहे हैं। Yes, I think यही हो रहा है ना, Virat scoring runs, and then the question is coming on his strike rate. Even though he's scoring at 140, 150, people still are questioning कि वो अपने लिए खेल रहा है। They're saying कि वो अपने लिए खेल रहा है। लेकिन if he's playing for himself, can you just look at the players around him? What are they doing? ना Maxwell खेल रहा है, ना Green खेल रहा है, ना Faf. Oh, he was struggling at the early stages, and when the spinners came in, उसके बाद we hit a couple of sixes, and then there were signs of him coming back to form. But again, once he got out, Maxwell, Green, like these guys, I don't know what they're doing. Especially Maxwell, I'm very disappointed the way he's playing. Every time the IPL comes, and he comes with a lot of reputation, he's going from one team to another team, but the result remains the same. Green again, we already knew कि उससे कुछ होगा नहीं. He's not an out and out all rounder. उसका bowling तो is always a question mark on his bowling.
and but batting भी नहीं हो रहा अभी. So what can you do? No spinners, no quality spinners. And you look at Rajasthan Royals. You know, they started very good RCB, but when the spinners came in, Ashwin and Chahal, तो एकदम से रोक लग गया run rate पे. So that's the difference between RR and RCB now, and or in fact any other team that RCB is playing right now. They're just like a one-dimensional team right now, and then one-dimensional plus relying on only one batsman. तो कैसे होगा? Exactly. So ठीक है, RCB is relying on one batsman. Innings के perspective चलता हूँ. How good was Rajasthan Royals in the bowling department? कैसा लगा आपको उनकी bowling department? Trent Bolt नहीं चले आज. For a change. Yes. He was poor, but how good was the RR bowling? Well, exceptional, I would say. Trent Bolt always used to get the wicket, a wicket in the power play. So इस बार क्या हुआ, power play में एक भी wicket नहीं गिरा. In spite of that, the spinners coming into play, Yajuvendra Chahal and Ashwin did not get a wicket, but the way he bowled did completely put a halt to the scoring. And that was a great comeback from RR. And I think that really actually was the turning point. RCB, looked like going to a 200 plus, but ended up at 180. And then also, so that was really amazing to see that the spinners actually supported the team. Bolt was not at his best today, but again, they had other players to back him up, and you know, and they played really. They supported each other very well. And then once the innings started, the batting of Buttler, was amazing. Clinical stuff from Sanju Samson. We'll come to the Rajasthan inning. Before we move on to the Rajasthan batting inning, if अगर RCB ने 100 प्लस का ओपनिंग स्टैंड किया था विदाउट लूजिंग अ विकेट, क्या उनको 200 स्कोर करना चाहिए था? Absolutely. I totally think they should have gone beyond 200. अगर आप कह रहे हैं 200 स्कोर करना चाहिए था और नहीं कर पाए, तो किसको ब्लेम देंगे आप? I will not blame Virat for that. I would definitely blame the middle order. Maxwell, Green, and I think I don't know. Probably if I was in Faf's place, I would have brought in Dinesh Karthik instead of sending Green ahead of. I would have sent Dinesh Karthik ahead of Green, because that was the situation when I think it was around the 17th over probably when Green walked in, and they didn't do anything. But it was the perfect stage for. बट विराट ने भी 157 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ बैटिंग की है. एक आर्गुमेंट हो सकता है कि उसको वापस 200 के स्ट्राइक रेट से, जैसा काफी टाइम से चलता आ रहा है कि 200 के स्ट्राइक रेट से उसको बैटिंग करनी चाहिए. और अरे यार, leave him alone. I would say leave him alone. Come on, what else will he do? मतलब it's very difficult for someone, when he knows that he is not getting the backup from the rest of the team to improve on his strike rate. If he goes out, if he gets out, trying to do that, we don't have anyone reliable who can carry on the innings now. चलो ठीक है. Let's shift our focus towards the next inning, which was Rajasthan Royals. Yashasvi Jaiswal gets out for a duck, disappoints again, but Josh Buttler, Josh the boss, वापस फॉर्म में, रोरिंग फॉर्म में. विराट ने सेंचुरी मारी, फर्स्ट सेंचुरी ऑफ दिस टाटा आईपीएल. जॉस बटलर कहता है कि मैं कहां पीछे रहता हूं, तेरे से बेहतर करके दिखाता हूं, and he won the match. Well, what can I say about Buttler? It was always, great performance was always round the corner. Looking at, knowing that the caliber of Buttler. One disappointment is that Jaiswal is not clicking right now. But again, वो तो होता ही है. Form, your form always doesn't stay with you all the time. But again, in spite of their failure, in spite of Jaiswal's failure, the rest of the team is really doing good.
And Buttler, क्या बोले उस मतलब what can you say about him? Is an मतलब after ABD, I think he is one of the most destructive batsmen that we have in the IPL. Plays amongst all the around the foreign wicket. batsmen. Yes, Amongst the yes. foreign batsmen. Amongst the foreign batsmen, plays all around the wicket. You will hardly find any weakness in his batting. So and he's come good, and the signs are very ominous for the rest of the teams now. RR is the team to beat. They're unbeaten, right? Fantastic. Yeah, undefeated. So what do you So what? Okay, I want to ask you the how did you like the batting of Sanju Samson? What can you chalo, say I about him? was about to Because there ask are a this lot of to you, talks but about his captaincy and his batting as well in the IPL, and I think he's proving a lot of his detractors wrong by playing such great innings, one after the I, other. I I was about to ask this. This was supposed to be my next question, but just because you asked, I would say it was a fantastic inning, a Absolutely. captain's knock. He came when in the first over when Jaiswal डक पे आउट हो चुके थे और उस समय आए. He controlled his innings fantastically. बहुत ही अच्छे शॉट्स खेले हैं. ठीक है, जैसे आपने कहा कि कुछ डिट्रैक्टर्स को उन्होंने मतलब शायद शेल चुप में कर दिया. रखा होगा कुछ देर के लिए. ठीक है, डिट्रैक्टर्स कभी शेल में नहीं रहते. वो उनको लगता है कि वो कम हमेशा वापस आ जाएंगे. बट दिस वाज अ फैंटास्टिक नॉक बाय संजू सैमसन. एंड मोर देन द फैंटास्टिक, चलो ये कैप्टन इनिंग तो थी, यहाँ तो संजू सैमसन ने कंट्रीब्यूट किया. How do you rate the captaincy of Sanju Samson in this particular match? I think the changes that he has made, the bowling changes that he has made, were commendable. After when the power play did not work, they did not get any wickets. Bringing in the spinners, trying to curtail the run rate. I think he made some very smart decisions, and I think that's the reason why I think even his captaincy was good. His batting was good. So I would really rate his captaincy very on the top in terms of today's match. If you look from the overall perspective, I think he's shown through from every angle. एग्जैक्टली मतलब ये एक रीजन है कि राजस्थान पिछले 2 सीजन में से एक सीजन में प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है, एक सीजन में 5वें नंबर पे रहा है. एंड दे आर प्रीटी मच ऑन कोर्स टू गो टू प्लेऑफ्स वंस अगेन कंफर्टेबली. आरसीबी की बॉलिंग के बारे में बात करने का कोई लॉजिक नहीं है. ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक शो बाय Josh the boss, Sanju Samson the captain, and Rajasthan Royals as a team. Let's move on because कल हमारे पास डबल हेडर है. कल हमारे पास 2 मैचेस है, MI versus Delhi Capitals. What are your views on that? I don't know who to support. 9 नंबर और 10 नंबर खेल रहे हैं उसमें. दोनों bottom में, and then both the teams are struggling. Are having their own struggles. So, but I would love to see Delhi winning. I would love to see a good knock from Priti Shaw. He has always been my favorite. Uh, and then he's a Mumbaian, so मतलब अपने घर में आके मुंबई वालों को बीट करना एक बहुत ही अलग ही feeling होगी. And I'd like to see how the crowd reacts to one more Mumbai loss. So सुनित, जस्ट आपको अगर पता नहीं हो तो हमने ना अपने चैनल में कुछ देर पहले एक वीडियो भी डाला था about what's going on in Mumbai Indians camp as well. ठीक है, आपने उस सेंटिमेंट को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया है from my perspective as well. But any which way, so you are going for a DC win, right? Yes, absolutely. I'll be supporting DC. Yeah, so am I. And who is the second? So am I? मतलब am I? Yeah, are you? So am I. What do you mean by that?
नो नो नो, आई एम सेइंग मैं दिल्ली मैं भी कैपिटल्स के अच्छा फेवर में जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ दिल्ली कैपिटल्स जीते। मैंने नॉट क्योंकि एम आई मेरी अंग्रेजी को तोड़ा और मड़ोड़ा ना जाए। And what about the second match, Vasu? I think that will be a more interesting match. Uh, LSG versus GG. Uh, I'm so happy to see a fast bowler like Mayank Yadav. My, Uh, yeah, it's like every Indian's dream is to have good fast bowlers to show the world. Yeah, हम भी प्रोड्यूस करते हैं लोग मेरे ऐसे players जो 150 plus bowling कर सकते हैं, and then the person can definitely reach 160 if he is very young now. So it's an exciting talent. So what do you think about that match? Who do you think has the upper hand? see, Lucknow has the upper hand, and Lucknow should win, and I feel they will win. Mm-hmm. टॉकिंग अबाउट मयंक यादव, देखो फास्ट बॉलर देख के हम इंडियंस कितने एक्साइट होते हैं। मैं अपना पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ। जब पहली बार 2000 में आईसीसी नॉकआउट होते थे, जब Uh, जहीर खान सबसे पहली बार बॉलिंग करने आए थे नैरोबी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, और मतलब उन्होंने एक यॉर्कर मारा था। मेरी लाइफ का इंडियन बॉलर को एक यॉर्कर मारते हुए देखने का एक्सपीरियंस सबसे पहला वही था। तो मैं uh, जहीर खान से भी एक्साइटेड था, इरफान पठान के स्विंग से भी एक्साइटेड था, मैं उमरान मलिक के पेस से भी एक्साइटेड हूँ, जसप्रीत बुमराह के वेरिएशन से भी एक्साइटेड था, मतलब एंड मयंक यादव, मतलब आई एम ऑल गेम, आई एम अ बिग फैन ऑलरेडी जस्ट विद yes, 2 IPL मैचेस। सो it is going to be a LSG win, pure LSG win. गुजरात सरप्राइज मी, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम होम, आपके पास बॉलिंग डेप्थ नहीं है, आपके uh, पास बैटिंग ओके है, डेविड मिलर नहीं है, केन विलियमसन आए हैं, तो आई वुड से इट्स एन एलएसजी विन फॉर श्योर। व्हाट्स योर थॉट? yes, same. I think LSG should win the match. And that it's very important. We can see it now. It's very evident that teams with a better bowling lineup, has always the upper hand uh, against teams with who has a lot of betting गुड depth. बैटिंग। Yeah. So नहीं हो रहा है मतलब even if you look at today's game, if you look at the 11 on paper, RCB का मतलब जो batting depth है, they should be easily clocking, going beyond 200 or 220 plus. नहीं, तो आई एम नहीं हो सॉरी, रहा है. आई बेग टू डिफर। मैं पेपर्स में भी आरसीबी को चांस नहीं देना चाहता था। देखो Okay. विराट कोहली की इनिंग्स थी जिन्होंने आरसीबी को 183 पे पहुंचाया था। अगर वो नहीं होता, अगर जैसे जायसवाल आउट हो गए, तो क्या फैफ इन Hmm. द कंपनी कुड हैव डन इट? नो, दे कुड नॉट हैव डन। They could not have done again it. again I would say, people who are going to see this, who are going to see this video on our channel, they are going to say yaar Vasu na Virat Kohli ka अंधभक्त है kind of, but that's what it is. It is the bowling जो हमें मैच जिताती है, अच्छी बॉलिंग। Correct. केकेआर इसलिए जीत रही है, राजस्थान इसीलिए जीत रही है, एलएसजी हैज गॉट अ गुड स्टार्ट इसीलिए क्योंकि उनकी बॉलिंग अच्छी है। एमआई बॉलिंग में फॉल्टर कर रही है, और सो ऑन एंड ऑन। बॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड करेक्टली सेड सुनित, कि बॉलिंग जिसकी अच्छी है वो टीम इस आईपीएल में बहुत अच्छी करेगी। Absolutely. Totally agree with you. चलो देन, ठीक है, इन दिस केस देन we'll wrap up this. We will catch up again tomorrow, guys. Before we wrap up, do not forget to like this channel, subscribe to this channel, hit the bell icon if you like this argument, if you like this review, and then do not hesitate to post your comments, post your views in the comment section. And thank you so much. Thank you.